Okay, so shall we start? Yes, sir. Yes, Yes, sir. And ये क्या फिर से glitch आ रहा है इसमें? Unknown user organizer. What is this unknown user? आपको क्या दिख रहा है? नाम क्या दिख रहा है ऑर्गेनाइजर का? सर आप ही देख रहे हो बस ऑर्गेनाइजर। अननोन यूजर दिख रहा है मुझे। पता नहीं क्या है ये, MS टीम है ना। और ये म्यूटेड, ये प्रैक्टिकल में मुझे बहुत वो हो रहा है कि कई बच्चों के माइक से वो हो रहा है, इको हो रहा है। मे बी सम ग्लिचेस मस्ट बी देयर। नहीं सर, वो Okay, मेरे so स्टूडेंट्स जो होते हैं स्पीकर ऑन करके सुनते हैं ना, तो वॉइस एको हो जाती है उससे। मैंने देखा था। So today we will start with the impedance or bridges, AC bridge actually, not the DC bridge. DC bridge आपको पहले ही पता है, it is very easy. But the AC bridge is also based on the same principle. You have to balance the bridge and measure the ratio of whatever the impedance you get at different arms. तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें, डेरिवेशन वैसे कभी आता नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। डेरिवेशन अगर आएगा भी तो एक क्यू मीटर है, एंड दैट क्यू मीटर विल हैव द डेरिवेशन। तो उसकी डेरिवेशन इसमें मैंने की हुई है, सीरीज और पैरेलल दोनों क्यू मीटर की हुई है। So I will just go in a very brief way and और अराउंड 11:45 पे क्लास में ओवर कर दूंगा। उसके बाद मीटिंग है, कॉलेज में ही हूँ मैं, तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज 1 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम। So we will finish off this topic and then we will go for the last unit, that is digital meters or digital basically the digital meters means voltmeter, ammeter or any kind of meter which is digitized. So impedance bridges actually used to measure the impedance of any unknown given you can say any reactance kind of circuit or reactance kind of device, something like capacitance, or you can have a inductance, or even if you have a resistance which may not be a perfect resistance, may have certain capacitance and certain inductance. पहले भी मैंने कई बार explain किया होगा कि कोई भी तीनों component आपके जो हैं element हैं जिसको element कहते हो, that element is never a perfect element. Resistance may have certain capacitance may have certain resistance, and inductance may have certain resistance. So हमेशा कुछ ना कुछ mix up रहता है. The domination is normally it is very less, उसकी domination उतनी ज़्यादा नहीं होती, but when you do with a smaller value of measurement, आपका voltage अगर बहुत ही कम है, means micro या milli या micro या nano volt में, then these factor become important and they give rise to the noise or some unwanted signals. तो हमें उन्हीं को measure करना है using these bridges. So what are the different bridges we have? Inductance के लिए we have 4 bridges, which is here, that is your Maxwell, which you have already done, A bridge, which you have not done, Anderson you have already done, and Ohm's bridge maybe you may have done that. मेरे ख्याल से कहीं हुआ नहीं, ओम्स ब्रिज भी नहीं किया हमने, ये दोनों ब्रिजेस नहीं किए, ए एंड ओम्स ब्रिज. नॉर्मल वेरी स्मॉल मॉडिफिकेशंस आर देयर कंसर्न्ड विद द सर्किट. All are having the same Wheatstone bridge principle. For capacitance measurement, we follow these two. This is not searching or something like that. This is sharing bridge, and this is D-sorty. D-sorty we have already done in the class. तो हमने 3 bridges Maxwell, Anderson और D-sorty हमने कर लिया है, and we have already we know how to perform the experiment, at least simulator experiment, not the physical experiment. तो आपको जो A+B ग्रुप है उनमें उस ग्रुप में से ये तीनों ब्रिज में से कोई भी एक ब्रिज you can design and you can use an unknown parameter of capacitance or unknown parameter of inductance and you can measure that. तो ये आप कर सकते हो. That is your one of the practical. A+B के लिए बता रहा हूँ, C+D के लिए नहीं. ठीक है. So the basic what the basic idea of this measurement of these values using bridge, or that is AC bridge, is the same as a what you known as a Wheatstone bridge. Same balancing of the bridge. You have to means between two nodes your current should be 0. In DC the current is 0, that is okay, but in AC there are two things that you have to maintain. The current should be 0
means their potential should be same. Current zero का meaning क्या है कि दोनों point पे potential same होना चाहिए. This is the bridge. And you pass the current in this from this particular path, and this is what you are measuring. So in this particular node, if potential A and potential you say V and VA, if they both are equal, if it is DC, then it is no big issue that VA and VB are equal, then there is no current is passing. But if it is AC, and even if the magnitude of V and VB are same, then also there is a possibility of current. Because if the phase difference between these two is say 180 degree or some other value, then the magnitude is same. It can be a possibility that magnitude is same, but there is also possibility that the phase is not same. Then there is a possibility of current through this particular branch. So what you have to maintain? You have to maintain that to balance a AC bridge, the magnitude and phase both should be balanced. तो AC में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है. और नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है जो हमारे पास जो डीसी होता है, डीसी में वी यूज गैल्वेनोमीटर. दैट इज वेरी सिंपल. इट जस्ट शो द डायरेक्शन ऑफ द current, very small current, either positive sense or negative sense. It will show you it is going in this way or that way. The needle will move in according to that. But if you have a AC, then galvanometer cannot be used. We have discussed already that if at a lower frequency, that needle will wobble, it will do a oscillation. And even at higher frequency, there is a possibility that needle may break or something could happen. Means it is not a good thing to use. So you don't able to find the balance point using a galvanometer when you are using a AC bridge. So what you have to use? You have to use a headphone. Headphone हमने last time भी किया था. There is a buzzer, and headphone normally when it is operating in the audio frequency range, then you can have these headphone, and if nothing is passing, if no current is passing through this particular arm or between these two terminal, then the headphone is not going to beep any sound. So from there you can detect, yes, the headphone is off. It means there is a balancing of the bridge has happened. So this is the requirement. This is a kind of a detector. This is a kind of a detector. So this is a detector which you use in the AC bridges. We have already discussed in the last semester. Then what is the next requirement? That this I have written there, the vibration of galvanometer. I have written the reason why it is not possible. But vibration galvanometer is also there. Means sometime if you could, if you see a video on a YouTube, and if the frequency is very high, and if something is moving in a very high value, and if your eye is not perceiving that particular motion, means for example, if even if it is moving in 1 second 50 times, then your eye is not capable of looking at the oscillation. Then what the effective thing you will see is the RMS value. So sometimes these needles are modified and they can be used, but we in lab we don't have these kind of galvanometer, which is called a vibrational galvanometer. So that can be vibrating also, but it will stay at the RMS value. So that is also possible. So we usually use this particular headphone detector. Then you have a tunable amplifier detector. That is also possible. Means if you have an amplifier, you can tune it. Tune it means you can modify or you can change the frequency of that particular amplifier, and you can use that particular amplifier to check that current is passing through these two particular arm or not. That is also possible. We don't have these two things in the lab. ये हमारे पास होते ही नहीं है लैब में. हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम टाइम हेडफोन्स होते हैं. So अभी ट्रांजिस्टर के बारे में वो सारी चीजें डिस्कस करने से बेटर है कि आई जस्ट अवॉइड, बट यू कैन राइट दैट दीज थ्री थिंग्स आर यूज्ड इन द AC bridges. So this is we don't see in the lab. The work from the frequency range be given है 5 to 100 तक ये. Higher frequency पे it will not work, but at lower frequency it is possible that it can show you the RMS value. Tunable amplifier is a transistor amplifier, can be tuned electrically and desired tunable amplifier detector at a tunable at a desired frequency, and this can be made to respond in a narrow bandwidth. जैसे normally bandwidth का होता है, हम ट्रांजिस्टर को यूज करके एम्पलीफायर बना सकते हैं, और एक particular current range में या particular frequency range में ही it will show certain things. So that can be drawn or that can be made.
but we don't use these things. But in exam, if it is asked, okay, what are the different kind of detector which you use, you can write these three detectors. And then what is the condition for the bridge balance? Normal current and voltage values I have not written in detail, but these two are the important final. You can do the derivation, that is not a big thing. You can do the derivation, गीता सेन में मिल जाएगा या किसी भी आपके एसी जो मैंने बुक आपको शेयर की थी सर्किट एनालिसिस बॉयल स्टेट की, उसमें भी आपको मिल जाएगा. First condition is the product of impedance of opposite arm must be equal. Look at this particular bridge and how we mark the Z1, Z2 and Z3. So Z1, Z2, Z3, Z4. So opposite arms Z1, Z4 and Z2, Z3 means Z1, Z4, and let me just go it down here, and Z2 and Z3. When they are equal, the bridge is balanced. This is the one condition. The other condition, that the angle, means this is actually the phase value. So phase value in arm 1, that is theta 1, and in opposite, that is theta 4, sum of these two must be equal to sum of these two. You can derive that. ऐसा कुछ इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि क्या डायरेक्ट लिख दिया है, but you can derive that, like, because just hold on. Okay, so the current equations आप लिख सकते हो, तीनों आर्म चारों आर्म का बैलेंस पॉइंट पे लिख सकते हो. Z1, Z2, Z1, Z4, Z2, Z3 must be equal, and they're not only the impedance, the magnitude of this phase also should be considered in these particular condition of balance. So this is last time भी मेरे ख्याल से हमने किया था, जब phases हमें divide होते हैं AC में, तो we subtract them, और जब multiply होते हैं तो we add them. If you remember कि दो एम्पलीट्यूड अगर V1 V2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके जो फेजेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और जब V1 by V2 कर रहे हो, जब डिवाइड कर रहे हो, तो उनके फेजेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इफ यू रिमेंबर पोलर फॉर्म हमने कन्वर्ट किया था ना, एसी सिग्नल जो साइनसोइडल सिग्नल होता है, वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ पोलर फॉर्म. एंड पोलर फॉर्म में, या जिसको हम नॉर्मली यू कैन से इन इमेजिनरी प्लेन, एक एक्सेस हमारा इमेजिनरी होता है, एक रियल होता है, तो उस पर हम मैग्नीट्यूड बनाते हैं और उसका जो थीटा होता है वो फेज वैल्यू बन जाता है. तो यू कैन हैव अ पोलर अरेंजमेंट, एंड पोलर अरेंजमेंट multiplication of angle is actually multiplication of voltages, means multiply the voltages magnitude and add the angles, add the phase angle. And when you divide the voltages, means you divide the voltages in a real value, means magnitude value, and just subtract the phase of both the this whatever the voltage you are considering. तो वो हमने पहले किया हुआ है. If you remember something from there, so you can understand that also. We have derived that. पोलर फॉर्म में हम कैसे करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इट इज इजियर इन टर्म्स ऑफ फेज. देन मेजरमेंट ऑफ, अब थोड़ा मतलब नॉट इन वेरी डिटेल, जस्ट अ सर्किट and all the bridges which we have written, around 6 bridges. So we will discuss advantage and disadvantage depending upon its circuit design. So the first is the Maxwell induction capacitance bridge. The circuit diagram is this one. Let me show you the circuit diagram. मैंने डेरिवेशन भी किया हुआ है, बट इसका सर्किट डायग्राम, रुको एक मिनट, मुझे अभी मैंने सारे ब्रिजेस का सर्किट डायग्राम नहीं बनाया है, जस्ट होल्ड ऑन. ये तो क्यू मीटर है, क्यू मीटर का ही मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है. ओके, सो इन एग्जाम there is a possibility that any particular circuit can come. वैसे अभी तक आया नहीं है कि कोई एक सर्किट को लेकर के पूरा डेरिवेशन करो, बट मे बी क्योंकि बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर में दे लर्न अबाउट द एंडरसन ब्रिज एंड द डिसॉर्टी ब्रिज, ये दोनों ब्रिजेस को कई बार पूछ लेते हैं. अब वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, बट सम टाइम दे आस्क कि भाई उसका डिजाइन, उसका सर्किट बनाओ और एक वैल्यू कैलकुलेट करो इफ दीज टू आर गिवन और दीज 3 वैल्यूज आर गिवन टू यू. तो मे बी मैं इसमें ऐड कर दूं उसको कि एक एक ब्रिज का डिजाइन और उसका एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा. मे बी, आई एम नॉट श्योर कि मैं ऐड कर पाऊंगा, बट अगर ऐड कर दिया तो मैंने वो वाला फाइल आपको शेयर कर दूंगा, सारे ब्रिजेस का एक सर्किट डायग्राम
और उसके जो कंडीशन है बैलेंस का, वो उस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस कंडीशन क्या है वो। बट नॉर्मली द यहाँ पे मैंने शायद उतने डिटेल में नहीं किया हूँ वहाँ पे, क्योंकि दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड। क्यू मीटर इज मोर इम्पोर्टेंट विच इज गिवन इन योर सिलेबस, तो क्यू मीटर पे मैंने ज्यादा फोकस किया है rather than other things. Okay, so what I have written, just let me see. The measurement of inductance using Maxwell inductance capacitance bridge. This bridge is used to measure the inductance of a medium Q value. Medium Q value is if Q is less than 10. If Q is less than 1, that is low Q value. If Q is greater than 10, it is called as high Q value. तो Q value को भी अगर आपकी value कहीं mentioned है कि how you will categorize if Q is 20 of any particular coil, then what is the range of this Q value? It is high, medium or low. So you can assign that value. So 1 से नीचे है, 1 से नीचे अगर Q value, then it is very low Q. It is not a good quality factor. If it is less than 10, 1 and 10 के बीच में, then it is a medium. If it is more than that, then it is a high Q value. In this bridge, the Z1, Z2 are kept constant and variable Z4, which is parallel in combination. Maybe Maxwell bridge आपने शायद देखा होगा, एक जगह पे आपके पास जो एक आर्म है उसमें आपके पास capacitance और resistance दोनों आ जाते हैं, which is a combination of R4 and C4. And the other one, that is the where you have the other thing, that is the unknown inductance or coil, that is at Z1 position. तो Z1 पे आपने एक coil attach कर दिया है, और normally constant है because you are not varying that, and R1 is the resistive part of that inductor. So if you say कि what is the Z1 is here now, Z1 is a coil and there is a resistance for that also. This resistance is not external any attached resistance. This is a series resistance, which is actually the effective resistive part of the coil. So there is a L1, there is a R1, and then you have Z1 and Z2 are kept constant. So Z2 will be a constant. So that is normally a resistance. So this is your Z2. And then you have Z4, which is somewhere here. This will be also Z3, that is also a resistance, but that will be a variable. And then you have a capacitance and a parallel resistance. So this is your Maxwell bridge. Okay, ये हमारा आ गया source के लिए. This is your AC source, and this must be a variable that you have to balance it. And then diagram क्यों नहीं बनाया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. Oh, I have not made the diagram. Normally without diagram I cannot write these things. तो मैं भी मिस हुआ मुझसे, तो कोई नहीं. If the diagram is there, then this is the diagram actually, C4 and R4, and you can easily find the balance condition. You can attach a headphone here. So headphone आपका यहाँ पे attached है. So this is what the Maxwell bridge is there, which is. और आप क्या करते हो कि नॉर्मली आपके पास कैपेसिटेंस भी कुछ केसेस में वेरिएबल होता है, बट आप Z3 को वेरी करके यू कैन बैलेंस दैट. ठीक है. So let us don't go in a detail of the calculation, but the calculation is not tougher. Z1 Z2 सब given है. Z1 हमने इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच कर रखा है, तो वी हैव रिटन the impedance form R1 plus j omega. J is the imaginary part, j omega L, and Z4 is parallel combination of these two. So this is a parallel combination, 1 upon R1 plus 1 upon j omega C, and then you do the rationalization and then you get this value. And Z2, Z3, they are just a resistance, R2 and R3. And you can check the balance करने के लिए क्या करना है, Z1 into Z4 must be equal to Z2 into Z3. Z2 Z3 आपका R2 R3 है, Z1 Z2 इनको मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी पार्ट और सबको एक जगह इकट्ठे करो, एंड इमेजिनरी को आप देखोगे इस साइड में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सो यू जस्ट कंपेयर द रियल पार्ट. सो रियल पार्ट यू कैन कंपेयर एंड नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड L1. ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट इज सिंपल अलजेब्रा. तो एक बार जरा हम आगे जाते हैं. शेयरिंग ब्रिज भी मैंने बनाया हुआ, इसका भी डायग्राम मैं मिस कर रहा हूँ, बट मे बी आई हैव टू ऐड द डायग्राम्स. तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि डायग्राम कहाँ गया. ऐसे आपको किसी बुक में मिल जाएगा, बट स्टिल आई शुड प्रोवाइड दैट.
तो इसको भी हम डिराइव नहीं करें, इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस हम यहीं पे चेक कर लेते हैं डायग्राम में क्या चेंजेस है। Z1 again we have a series combination of R and C. Okay, Z4 is series parallel combination of R4 and C4, and Z2 is C2 and Z3 is resistance. So these are the important things. So you can easily आपके दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए, Z1 Z2 Z3 कहाँ पे रखे हुए हैं, और इक्वेशन देखते ही आपके ब्रेन में यू शुड हैव अ सर्किट डायग्राम कि भाई Z1 पे मुझे दो लगाना है, एक कैपेसिटर लगाना है, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस अटैच करना है। Z4 पे मुझे यहाँ पे जो उसका अपोजिट आर्म है वहाँ पे मुझे दो component attach करने, one is capacitor, one is resistance which are in parallel, and Z2 यानी जो ऊपर वाला Z1 था उसके नीचे आपका एक simple capacitance आएगा, normally this capacitance is variable, and Z3 there is a this arm and that will be a simple resistance, and then you can again do the same kind of thing कि Z1 into Z4 and that should be equal to this value. अच्छा मैंने यहाँ पे j omega c लिखना था, but whatever, I have to write that. यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का सा मिस कर रहा हूँ, दिस शुड बी j omega c2, है ना, यही आएगा यहाँ पे, if I am writing in the terms of impedance then this should be j omega c2 and this is R3, so that will be this one. So if you multiply these things and according to the balance condition, if you check, then you get these two as a balance condition and you can find the value. So balance condition तो यहाँ पे these are the R1 and C1, आपका जो capacitance unknown capacitance है और उसका जो reactive part है that is R1, that is you can find easily by other things which is connected in the bridge. Now we come to the Q meter which is your syllabus part. ठीक है, शायद ये दो मैंने इसलिए डिस्कस किया होगा because maybe because you have not learned about those two different kind of bridges. आपने एंडरसन पढ़ा हुआ है और डी सॉर्टी पढ़ा हुआ है, तो that is why I have discussed these two. Okay, now we come to the Q meter. What is a Q meter? Q meter is actually a instrument which actually directly give you the value of Q value of your coil. तो Q meter का simple main purpose क्या है, आपके coil का Q value measure करके देगा. जो normal connection है, which you can easily see here, which is a basic block diagram you can say. The block diagram says that it is a series combination of LCR. और कुछ नहीं है. R, L inductor. This R is the part of this inductor only. Okay, so inductor का जो reactive part है वो है. So this is total is coil. I have written here. This is a coil, single coil, and then you have a capacitance. So there is a LCR combination. और ये हमारा नोन होता है या इसको हम वेरी कर सकते हैं और ये हमारा अननोन होता है. तो इस अननोन की वैल्यू वी कैन फाइंड यूजिंग दिस नोन वैल्यू. At resonance we know the formula that XC must be equal to XL. जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी तो ये दोनों वैल्यू पे XC और XL मस्ट बी इक्वल. तो हमारा नॉर्मल रेजोनेंस कंडीशन होता है, सीरीज में भी होता है और ऐसे हमारा पैरेलल में भी होता है. तो वी कैन मेक पैरेलल circuit also for the Q meter and we can make the series circuit also for the Q meter. When एक सेकंड होल्ड करना. Okay, so balancing is not balancing, the resonance condition we have to check here, and resonance condition is that is just मेरा ये पेन वर्क नहीं कर रहा था, I have just reconnected again. Okay, so EC
EC is the voltage across the capacitance that is equal to I naught current which is passing through and the impedance that is XC. And when the resonance condition is there, I naught is same because this is a series connection. So I naught तो दोनों में same होगा और I naught is the resonance current you can say. जब resonance exist कर रहा है यानी एक particular frequency पे दोनों impedance same हो रहे हैं तो आपका जो भी current flow हो रहा है that is obviously due to the this small r which is the reactive part resistive part of the your coil or inductor. So E divided by R that will be I naught. तो वो फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है और EC is the voltage which is across the capacitance that will be equal to EL which is I naught XL. So normally this R is very small. This is not a very big value. This is hardly a 10 ohm, 30 ohm, 40 ohm. बहुत खराब हुआ तो 100 ohm तक चला जाएगा. Otherwise normally it is 5, 10, 30, 15, not more than that. सारे पैरामीटर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है और यहाँ पे एक आपके पास फेजर डायग्राम भी फॉर्म कर रखा है. फेजर डायग्राम में ई और आई पैरेलल में है. ईएल की वैल्यू थोड़ी सी शिफ्टेड है और ई आई सी ईसी मींस जो करंट आप जो वोल्टेज ड्रॉप आपका कैपेसिटर पे दैट इज समवेयर हियर. व्हाई ईएल इज नॉट 90? कैन एनीवन से व्हाई ईएल इज नॉट 90? दिस ईएल ईसी तो 90 है. ई के रिस्पेक्ट में जो आपका इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में आपका ये 90 डिग्री पे है. But why not this value is at 90? Why it is less than 90? Sir, because some part of R is also considering it. Okay, means if I consider this one only, if I have took this one, then that would be 90. But this is not exactly the potential drop across XL. It is also a potential drop which is added with the this particular potential drop across the resistance. एक resistance का potential drop जो कि exactly इस direction पे है, इसका potential drop जो exactly इस direction पे था और दोनों का combination आपका in between आ गया. That is why it is somewhere here. ठीक है? Okay. So Q value का formula it is according to XL according to XC according to EC by E. That is the same thing. कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. हमने Q value के formula पहले भी बहुत सारे measure किए हुए हैं देखे हुए हैं. This is a practical Q meter. अब हमारे पास Q value measure करने का तरीका क्या है? जो formula अगर देखते हो, so this is the basic formula we will use. EC upon E, or you can use XL upon R, but XL तो आप calculate कर रहे हो. और XC अगर perfectly known है तो ये भी formula use कर सकते हो. But better is to use this formula. And once you find the Q value and you know if you know the resistance of this particular coil और उसका क्या means when you apply a DC current then you will get the resistive part of that coil and you can easily find the value of XL or you can find the inductance value also. एक बार जरा हम practical जो हमारा Q meter होता है उस circuit पे आ जाते हैं. This is the practical Q meter. बहुत ज़्यादा difference नहीं है. ये part पिछला वाला ही है जो आपका ये part दिख रहा है L, R and C. That is the same thing. Uncoil and the resonating capacitor. You can vary this, and when you vary this, you just vary in such a way that you get a resonance condition. But the potential that you applied to this particular circuit is not directly applied. Potential ये रहा. हम उसको indirectly apply करें. Indirectly भी बहुत indirect नहीं है. It is somewhat in the other sense. That is, there is an oscillator. Oscillator is a potential source. It is producing a signal and having a certain amplitude. There is a resistance, which is a safety resistance, you can say, to not pass a much current from this particular RSH, shunt resistance. So now this is the resistance which is very important. And this value is hardly 10 ohm. बहुत ज़्यादा which is dropping across this particular resistance, that is only given as a signal. जो important part, जो working part है वो ये वाला part है. बाकी तो सारे यूनिट है. ये तो मेजरमेंट यूनिट लगा हुआ है. ये इसको एक substance and that is being used to activate this particular resonating circuit. This potential which we don't measure by the normal voltmeter, we usually measure by a thermocouple voltmeter. Thermocouple voltmeter याद है क्या था?
हमने डिस्कस किया था मे बी जब वोल्ट मीटर डिस्कस कर रहे थे, तो थर्मोकपल या जिसको हम कहते हैं रियल आरएमएस वोल्ट मीटर, रिमेम्बर दैट? ये भूल गए? Yes, sir. उसमें एक थर्मोकपल अटैच था जो हीट को सेंस करता था. इफ यू रिमेम्बर, इट मींस इट इज नॉट डूइंग अ डायरेक्ट मेजरमेंट, इट इज एक्चुअली मेजरिंग द हीट और आई स्क्वायर आर टी वैल्यू को मेजर करता है और उससे वैल्यू निकालता है कि पोटेंशियल क्या ड्रॉप हुआ है. सो देयर इज समथिंग लाइक अ रियल सेंस ऑफ पोटेंशियल आर गेटिंग. तो आपका जो हीट जनरेट हो रहा है ना, वो हीट हमेशा जो भी करंट उसमें से पास, जो इफेक्टिव करंट विच इज एक्चुअली नॉर्मली गॉट एवरेज और आरएमएस करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. So it is measuring using a thermocouple meter. So the value of this means E you measure by a thermocouple meter. Then again, what about EC? EC we have a normally a voltmeter, but that voltmeter is means that voltmeter is said to be as a Q meter. Let me just give you what the why we call it as a voltmeter, as a Q meter, which normally it is calibrated. The Q meter consists of a wide range of oscillator which is of this value. It delivers a current and the value of shunt is very low. Even this 10 ohm is, I have said, very large. It is about 0.02 ये ohm है, ठीक है, 0.02. So that is hardly a tens of milli, 20 milli ohm. So that is very small. It introduces almost no resistance into the oscillatory circuit. Means because we have to maintain that this resistance still should be dominating with respect to this one. This should only provide a potential rather than any resistance to this particular circuit. अगर resistance add होगा तो resistance अगर मैं add कर देता हूँ और 1% से ज़्यादा add करता हूँ तो मेरा जो answer आएगा, answer will not be exactly of this particular coil value. तो coil के resistance से बहुत ही कम, hardly less than a percent, or you can say fraction of 0.1%. That should not be more than that. So we have to maintain this condition. It introduces almost no resistance to the oscillatory circuit and therefore it is representing a voltage source of the magnitude E. जो उसका potential drop होगा वो इसके लिए voltage source की तरह act करेगा. But it will see in the source that there is no resistance in the source. The voltage E across the shunt is measured by a thermocouple meter marked as a multiply Q by. Normally उस पे mentioned होता है multiply Q by. So what the people do, कि कैपेसिटर की जो भी वैल्यू है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे है, हम इसको कैलिब्रेट भी करते हैं फॉर अ सर्टेन मेजरमेंट. ये फॉर्मूला है, ठीक है. इस फॉर्मूले में हमारे पास ईसी की वैल्यू क्या है, ई इंटू क्यू, ठीक है. तो वॉट एवर द वैल्यू आर गेटिंग एट दिस पॉइंट, जो आपका थर्मोकपल वोल्टमीटर शो कर रहा है, इस वैल्यू को आप क्या करते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो एक क्यू वैल्यू से. मे बी क्यू कैन बी कैलिब्रेटेड, कि उसको 10 पे कैलिब्रेट कर दो या 5 पे कर दो या किसी और वैल्यू पे कर दो, या आगे जी इस लैब में बैठ कर नहीं, ये 10 बार तो निकलते हैं बाहर, 10 बार चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं, फिर घुसते हैं. आप लोगों ने किसी ने लैब देखा ही वाला, लैब NCL1? नहीं सर. Have you ever visited? नहीं. यस सर. हाँ, इसमें वो 10 बार तो निकलते हैं, घुसते हैं. मैं बाहर बैठता हूँ, अंदर बैठूंगा तो और शोर आएगा. मैं बाहर बैठता हूँ और बाहर बैठूंगा, 10 बार निकलेंगे, बोलते बोलते निकलेंगे. इनको बता देता हूँ कि क्लास चल रही है मेरी, थोड़ा चुप रहो. फिर भी बोलते बोलते निकलेंगे, फिर बोलते बोलते घुसेंगे. इसलिए इट इज गुड टू टेक द क्लास फ्रॉम होम ओनली. कॉलेज से लेना बहुत मुश्किल है ऑनलाइन. फिजिकल तो वही कॉलेज में ही हो सकता है, बट ऑनलाइन सर तो इट इज आप वेरी क्लास डिफिकल्ट. में चले जाइए. क्लास में भी मेरे पास मोबाइल में दिक्कत होगी ना. क्लास में लैपटॉप तो कनेक्ट हो जाएगा, बट मोबाइल का डेटा कनेक्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा. आई एम ऑन अ सिंकिंग शिप कंपनी. जो कंपनी डूब रही है ना, उसका मेरे पास कनेक्शन है वोडाफोन का. तो वोडाफोन तो आज के टाइम में बेचारा रो रहा है, सारा का सारा बिजनेस वो ले गया जियो. सर लैब 1 के बगल में जो क्लास है ना, कल उसमें अच्छा नेटवर्क आ रहा था. वोडाफोन इज जस्ट लीव इंडिया. हाँ, वो एक्चुअली उसमें ना कोई और टीचर एक बैठते हैं, वो
अरुण नाम उनका, वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनके लिए थोड़ा सा, वो रूम भी बड़ा गंदा है, वो सफाई सफाई रहती नहीं, वो चिपके लिए पता नहीं क्या क्या घूमती रहती है वहाँ पे। वो रूम ऐसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूम हुआ करता था एग्जाम के टाइम में, दैट इज अ कंट्रोल रूम, और वो रूम यूटिलाइज करते, लेकिन अभी साफ सफाई नहीं रहती है। हियर इट इज ऑलवेज यूज्ड, ये वाला रूम थोड़ा साफ सुथरा रहता है, झाड़ू पोछा हो जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। ओके, सो कम बैक टू द व्हाट इज क्यू multiply by q. So normally if you see the formula, they are related to q. So what we have to do, we have to multiply this value by q value, so that whenever you see this value जो आपका वोल्टमीटर यहाँ शो कर रहा है, अगर आप q से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट आ रहा है और मेरा q फैक्टर मुझे पता है कि 10 के आसपास है या 5 के आसपास है, तो मैं एक मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ पहले ही कि 10 से मैंने मल्टीप्लाई करके 10 वोल्ट, यानी जो मीटर मुझे शो कर रहा है उसको मैंने q से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वट एवर द वोल्टेज इट इज शोइंग, इट विल शो मी द डायरेक्टली द q वैल्यू, सो आई कैन कैलिब्रेट दैट। सिंपल रीजन है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों फैक्टर। सो लेट मी जस्ट, दोबारा उन लोग की एंट्री हुई है, they just gone to throw the dust this कप प्लेट, जो कप का होती है ग्लास होता है उसको फेंकने गए थे बाहर फिर आ गए। ओके, ऐसे एंजॉय भी करते हो, कॉलेज आओगे ना तो एंजॉय भी करोगे, घूमोगे फिरोगे इधर उधर। ओके, सो कम बैक टू दिस वन, ज्यादा टेंशन मत लेना, हमारे पास टाइम है पूरा नवंबर और दिसंबर भी बचा हुआ है, तो वी विल फिनिश ऑफ द सिलेबस, उसके लिए टेंशन मत लेने की सिलेबस खत्म नहीं कर रहे सर हमारा। तो सर एग्जाम तो सिंपल, ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ फिलहाल तो अब तो केसेस वैसी है कि ऑनलाइन ही के चांसेस हैं, क्योंकि ऑफलाइन थोड़ा सा कम चांस है, अब तो कम हो गया क्योंकि अब 1 महीना बचा है, 1 महीने में कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया तो चांसेस कम है। बट आई वुड अगेन से यू कि मिड नवंबर तक का वेट करो कि क्या सिचुएशन है, बट होपफुली जो नेक्स्ट सेमेस्टर है दैट विल बी ऑफलाइन। तो फ्रॉम नेक्स्ट स्टार्टिंग सेमेस्टर ओनली की, ना? हाँ जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो भी आपको जो नोटिस आएगा वो दिसंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर के एंड में नोटिस आ जाएगा यस आफ्टर सर, दिस सेमेस्टर थर्ड तो ईयर एग्जाम। स्टार्टिंग में ही अच्छा लगता है सर, स्टार्टिंग से ऑफलाइन करो ना तो ऑफलाइन एग्जाम देने का भी वो होता है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, नहीं मतलब नेक्स्ट का तो चांसेस बहुत फेयर हो चुका है आज के टाइम में, और अगले यस 2 महीने में शायद 90% कवरेज भी हो जाएगा वैक्सीनेशन का, तो देर इज अ फेयर चांस नाउ। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन आउट ऑफ द मींस आउट ऑफ इंडिया आल्सो दे आर ओपन नाउ, एंड दे आर ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आल्सो, तो अब सब कुछ खुलता जा रहा है। नाउ द कोरोना हैज गॉन, योर हॉलीडे पीरियड इज नाउ ओवर, तो जनवरी से यू हैव टू स्टार्ट विद द फिजिकल। अब छुट्टियां खत्म हो गई, सारे संडे चले गए, अब कुछ ही संडे बचे हैं आपके जो आप एंजॉय कर सकते हो। संडे भी चला जाता है क्या ऑफलाइन में? मतलब क्या क्या कह रहे हो? संडे भी, मतलब हॉलीडे, संडे हॉलीडे भी नहीं देते मतलब ऑफलाइन होता है तो? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो सभी सारे दिन ही आपके लिए संडे है ना, इट इज 30 संडे इन एवरी हाँ मंथ, यस सर, यस 30 सर, यस 30, सर। so that Sunday will decrease, so that will go खुशी back से to सर, 5 or 4 खुशी से। Sunday। और सर अभी प्रॉब्लम सारे वार आएंगे सोमवार से। क्या आएंगे? सारे वार आएंगे, जैसे सोमवार मंगलवार से कॉलेज जाएंगे हाँ वो सब। सारे सारे ही आएंगे मतलब जो 30 संडे थे ना, वो 30 संडे घट करके 4 या 5 रह जाएंगे और यू विल थ्राइव फॉर द हॉलीडेज की कब हॉलीडे आएगा। जैसे अभी कॉलेज के लिए कर रहे हो ना कि अभी कॉलेज कब खुलेगा, कॉलेज कब खुलेगा, बाद में बोलोगे कॉलेज बंद कब होगा, छुट्टियां कब होंगी। चलो कोई नहीं, जनवरी से अगर खुल जाते दैट विल बी वेरी गुड, यू कैन हैव फिजिकल क्लासेस फॉर 50% ऑफ योर कोर्स। 1.5 सेमेस्टर मतलब 3 सेमेस्टर तो आप कैसे चलेंगे, 3 शायद फिजिकली हो जाए तो यू मे फेस द इंटरव्यू इन अ बेटर वे। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा कि आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो क्या सारा काम। ओके तो इंटरव्यू MS टीम्स पर ही देंगे? हाँ हाँ वो कर लेंगे, आपको मीट्स पे या गूगल पे या जूम पे ले लेंगे, बोले ऑनलाइन ही करो, आप ऑनलाइन घर पे यहाँ आने की जरूरत नहीं ऑफिस में, आप घर से ही काम करो,
जो काम हमारे लिए घर से हो सकता है वो हम आपको देंगे, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। सैलरी भी ट्रांसफर हो जाएगी और पूछने बताना कितनी दी गई कितनी नहीं दी गई। Okay, so what is the measurement procedure? So what we do, we just multiply the voltmeter by a Q factor, that is the calibration part. तो हमें जो दिखता है ना वैल्यू, हम नीडल तो घूम रहा है लेकिन वहाँ पे Q लिखे होते हैं, वहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखा होता है, there is a Q की 1 है 10 है, तो you just calibrate that in the sense कि आपने क्या वोल्टमीटर लगा रखा है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते हो, so that is a calibration part. Procedure, the unknown coil, let me just select the N. So the unknown coil is connected in the test terminal T1 and T2 पर डायग्राम था, वो डायग्राम दोबारा अब नहीं ला रहा हूँ, but डायग्राम you must have in your brain कि भाई हमारे पास टॉप कॉर्नर पे हमारे पास कॉइल था और साइड में हमारे पास एक कैपेसिटेंस था जिसको वेरी कर रहे थे, इधर एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे थ्रू ऑसिलेटर, एंड देन वी हैव अ मेजरमेंट यूनिट वेयर दिस इज अ वोल्टमीटर. So this circuit is tuned in such a way that you get the resonance condition. तो पहले तो आपने कॉइल कनेक्ट किया, कॉइल कनेक्ट करने के बाद टर्मिनल T1 T2 पे, देन यू जस्ट डू द रेजोनेंस. तो आप क्या करते हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते हो, यू हैव अ वेरिएबल कैपेसिटर, तो वेरिएबल कैपेसिटर को यू कैन ट्यून दैट. तो नॉर्मली हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इतनी वैल्यू होगी तो वी कैन डू द प्री सेटिंग और वी कैन एडजस्ट द कैपेसिटर. और अगर कैपेसिटर की एडजस्टमेंट बहुत पॉसिबल नहीं है तो यू कैन चेंज द ऑसिलेटर आल्सो. तो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑसिलेटर के भी फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो इफ योर कैपेसिटर हैज अ रिस्ट्रिक्शन कि इससे ज्यादा वेरी नहीं कर सकते हो कैपेसिटेंस, तो यू कैन चेंज दिस ऑसिलेटर आल्सो. एंड इफ योर कैपेसिटर इज वेरी गुड that you can change the capacitance in a say milli to say micro nano farad, so you can change that also. Then Q reading of the output meter must be multiplied with the index setting of the multiply by Q meter. तो multiply by Q meter means एक Q value को multiply करके check करना है, calibrate करना है. एक आप नोन इंडक्टर के लिए कैलिब्रेट करोगे, फिर अननोन के लिए आप देखोगे कि वो कितनी वैल्यू है. तो नीडल की डिफ्लेक्शन से यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी Q वैल्यू की वैल्यू आ क्या रही है. देन वी विल गो टू द सर्किट. ये मैं सारी वही रेजोनेंस कंडीशन लिखी हुई है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया. नाउ वी गो टू द फॉर्मल सीरीज क्यू मीटर. सीरीज को मैं डिस्कस करूंगा, पैरेलल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है. पैरेलल को मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर दूंगा और पैरेलल को आप चेक कर लेना कि क्या कैसे उसमें डेरिवेशंस हैं और कैसे उसके वैल्यू निकालेंगे. दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज वेरी इजी, सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं है. Series connection of Q meter. So this is one of the series combination. There is a oscillator, there is a variable capacitor, and there is a Q voltmeter, means it is a voltmeter but its needle is calibrated or its deflection is calibrated according to Q value. Then this is a working coil or you can say unknown coil, and then there is a low impedance also, and there is a switch. So how we do the measurement, ठीक है. हम इस unknown value L और R को डिड्यूस कैसे करते हैं जो टर्मिनल T1 T2 के बीच में लगा हुआ है. The steps are written to you. First measure the unknown. First measurement the unknown is the यहाँ कुछ missing है line unknown. This one, this short circuiting the by a small shorting strap and the circuit is resonated. The value of tuned capacitor C1 and indicated at this. And let me just see what I have written this. If you do the shorting of this one, when you do the shorting of this connection, अगर आप इसको short कर देते हो, then you have only this particular path. ठीक है. तो this particular path में you just try to find the resonance condition. That resonance condition is decided by C1. तो जो भी वैल्यू पे आपकी सर्किट रेजोनेट हो रही है वो C1 की वैल्यू है. The small shorting gap and this circuit is resonate. तो इसको short circuit हमने कर दिया, this gap. ठीक है. Second measurement is shorting gap is removed. Now it is removed. Now it is open. Now if it is open, now it will do the resonance through this particular path. आपका ऑसिलेटर ये रहा, एक लो इम्पीडेंस अटैच्ड है और ये आपका रेजोनेटिंग सर्किट है. नाउ इट विल डू अ डिफरेंट रेजोनेंस बिकॉज आपने पहले तो आर के साथ रेजोनेट किया था, अब उसको जेड एक लो इम्पीडेंस के साथ भी रेजोनेट कर रहे हो. तो दिस विल एड अप टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो ये दोनों की वैल्यू अब मैच होनी चाहिए. तो अब जो रेजोनेंस कंडीशन आएगी वो C2 पे आएगी.
पहली कंडीशन C1 पे आई थी, दूसरी कंडीशन C2 पे आई है, ठीक है। सो नाउ वी डू द कैलकुलेशन, सी द कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट मेजरमेंट XC1 is equal to XL, XC1 is equal to XL, यानी XL जो भी आपका आ रहा था वो XC1 से मैच कर रहा था एट रेजोनेंस। जो सेकंड कंडीशन है जब आपने मेजरमेंट किया तो दैट इज XS which is new kind of you can say impedance। अगर ध्यान से देखोगे तो इस XL को अगर इधर लेके आते हैं तो XS plus XL must be equal to XC2। XS क्या था, जो आपका Z इम्पिडेंस अटैच था उसकी वैल्यू है, और जो आपका इंडक्टर अटैच था उसकी वैल्यू है। तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों को आपको ऐड करके दैट मस्ट बी योर एक्स्ट्रा एंड दैट विल बी योर रेजोनेंस कंडीशन। तो अब उसकी वैल्यू आपने ओमेगा के टर्म्स में डाल दी और उसको सॉल्व किया। नॉर्मल जो कंडीशन है दैट इज C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2 बिकॉज यू आर एडिंग अ पार्ट, आप इसमें ऐड कर रहे हो तो वो इनवर्सली रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका इम्पिडेंस होता है कैपेसिटेंस का 1 ओमेगा सी होता है और इंडक्टर का ओमेगा एल होता है, तो 1 ओमेगा सी मींस इट विल डिक्रीज, सो C1 विल बी ग्रेटर देन C2 एंड दैट विल बी यू कैन से इट इज अ इंडक्टिव काइंड ऑफ नेचर। जो आपका XS दिस वन जो आपका ये वाला है लो इम्पिडेंस, this is something like whichever the low impedance you have attached that is a kind of inductive, you can easily see that कि वो किस केस में इंडक्टिव होगा, किस केस में वो कैपेसिटिव होगा। द रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ अननोन इम्पिडेंस RS इज, ये डेरिवेशन में करवा नहीं रहा हूँ, देखो करवाने के लिए मुझे बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं जब डिक्टेट कर रहा हूँ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, डिक्टेट में आपको लिखने के लिए बैठना पड़ेगा, बट we just skip this derivation, ये आता नहीं है कभी, मैंने किया हुआ यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट ऐसे आता नहीं एग्जाम में कि you have to derive these things, you have to just explain these things। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था ना this one, ये आपका क्यू मीटर का ब्लॉक डायग्राम, this one and how it is working, that's all। यहाँ तक का पार्ट मैक्सिमम यहाँ तक का आएगा, थोड़ा सा और डेरिवेशन नीचे तक कर लो, ये वाला जो आपके 2-3 टर्मिनल्स हैं ये सारे लिख दोगे, दैट्स ऑल। दिस इज द पार्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू यू, इसलिए मैं नीचे वाले डेरिवेशन में मेरा मूड भी नहीं है जाने का करवाने का, तो मैं शेयर कर दूंगा आपको एंड इट इज सिंपल पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी को आपको सर्किट को देख करके समझना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा भी करवाने का कोई फायदा नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और इसका थोड़ा सा मैं दे दूंगा आपको जो डिफरेंट, ये भी बहुत सिंपल है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, डिफरेंट ब्रिजेस के जो कंडीशन थे, तो आई होप कि ये चीज ना ही समझो तो बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम इजी कर रहा हूँ, आई विल शेयर यू, इफ यू वांट टू रीड दैट यू कैन रीड इट, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट और इवन द इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर एग्जामिनेशन। तो मैंने कर दिया था लास्ट टाइम, मैंने किया हुआ था, बट आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, ठीक है, बट हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, मैंने सारे मार्क कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, पैरेलल भी मैंने कर रखा है। तो आई वांट टू फिनिश ऑफ दिस। क्यू मीटर आपको मैंने समझा दिया, क्यू मीटर का ब्लॉक डायग्राम दे दिया, क्यू मीटर का काम क्या है वो बता दिया मैंने, एंड इस टॉपिक से इतना ही आता है। अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी मुझे बंद भी करना है, इसलिए आई डू दिस, इसीलिए मैंने इसको बंद किया कि भाई अब क्लास 2 मिनट में बंद ही करनी है, तो आई डोंट वांट गो इन डिटेल। तो यहाँ पे हम एंड करें इसको, और इस टॉपिक को हम नहीं करेंगे, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ना, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम। अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका मीनिंग है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सर को नहीं पढ़ाना, आपने कहा तो सही होगा सर, ऐसा मत समझना कि सर को नहीं पढ़ाना था इसलिए बोल दिया कि सर ने एग्जाम में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस ये समझ लो। ठीक है, तो सिर्फ क्यू मीटर आता है, सीरीज और पैरेलल शायद ही किसी कॉलेज में करवाते होंगे वो, बट कर सकते हो, इट इज इजी। हमारे पास टाइम बचेगा तो हम वापस यहाँ पे आएंगे, बट मुझे मेन स्टार्ट करना है डिजिटल वाला, उसमें थोड़ा सा पार्ट हमें डिटेल में करना है, जिसमें डीएसी है, एडीसी है, देन वी हैव एनालॉग, एक एम्पलीफायर यूज करके हम कैसे डिजिटल कन्वर्ट करते हैं,
फिर काउंटर्स हैं, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो हम टॉपिक डिटेल में करेंगे, ठीक है, ये हम ज्यादा नहीं करेंगे। Yes, तो अभी मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, so I'm just ending the recording and अभी मीटिंग है तो I have to go there, ठीक है। सो ये टॉपिक अब हमारा सिर्फ लास्ट यूनिट बच गया, दैट वी विल स्टार्ट इन द